The Indian community of Long Island celebrated the 79th Independence Day at the Marriott Long Island, organized by Naveen Shah's Navika Capital Group and Blue Sky Hospitality Solutions with Haridas Kotawala. Over 1,000 attended, including Bruce Blakeman, Nassau County Executive, and Satnam Singh Sandhu, MP Rajya Sabha. Hari Singh Bola stressed unity, while a cultural program honored freedom fighters with performances by Neha Bansali and Budh Prakash, and a proclamation read by Varinder Bhala. Co-hosts Dr. Raj Bayani and Madhu Parikh guided the event, which also marked Janamashtami with prasadam sponsored by Dr. Deepak Nandi. Naveen Shahs closed with a message of pride, heritage and unity. Let's watch some highlights. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम सम्मानित किया गया किन के आगे सर झुकाना पड़ा, कैसे कैसे आतताइयों के अत्याचार सहने पड़े। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू शोधपा जी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो आज़ादी दिवस मनाने की। आज का दिन हमारे शहीदों के लिए उनको याद करने का है और बेहद खुशी हुई कि आप अपनी जन्मभूमि से इतना दूर होकर भी अपनी इस कर्म भूमि पे अपने दिल में वतन का जज्बा लेकर बैठे हो। मैं जब शुद्ध भाजी का मुझे मैसेज आया कि हमारे एक ऐसा इवेंट हो रहा है, तो आप जानते हैं कि वहाँ पे पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो मैंने कहा जी चाहे एक दिन के लिए आऊँ, मैं आऊँगा ज़रूर। और मैं 2 सूटकेस लेके आया था, एक में तिरंगे भर के लेके आया था और दूसरे में मैं अपने कपड़े पहनने के लिए। लेकिन मैंने अपना सूटकेस वो खोला ही नहीं, क्योंकि जब देखा कि आपके तो हर दिल तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर गली तिरंगा, तिरंगा ही तिरंगा, मैं दिल से आपको सल्यूट करता हूँ। It is my great pleasure and honor to do the opening remarks for this amazing, one-of-a-kind event of celebrating Independence Day of India with pride, gratitude, and deep sense of connection to our motherland, even though we are thousands of miles away from there. For Indians in any corner of the world, our love and affection for India and our commitment to adopted country, USA, is defined
by our desire to do our best for people of both countries. And celebrating India Independence Day in New York, Long Island, fulfills that desire. As we serve people of both countries right here, right now. So obviously the night would be long. So I would like to start from basically saying it is absolutely a great pride that we are here together to honor some of our heroes that have given their lives and got us their freedom 79 years ago. There's someone like Naveen Shah, the head of the Navika Capital Group, made a lot of efforts to put together, and it takes a lot to put everybody, especially from our community, the people of all leaders, all civics, to be together in one place. I only speak one language when I stand in front of you. Be united, be one voice, stand for all. Do not be divided. Harry Singh is my Indian brother from another mother. I love Harry. Let's hear it for Harry Singh and all he does for our community. I want to thank some honored people here tonight. First of all, the highest elected Indian American in all of Long Island, our North Hempstead Town Clerk, Ragni Srivastava. Ragni, thank you. My senior advisor, Manny Akram, and the chairman of our Human Rights Commission and chairman of our County Transportation, Bobby Colati. Where's Bobby? There he is, he's in the back. Okay. First of all, for those of you who are not from Nassau County, welcome. Welcome to the safest county in America. U.S. News and World Report said that, and the most desirable place in New York State, as claimed by Niche magazine. Nassau County is home to almost 1.5 million people. We are larger than 10 states. Our gross domestic product is larger than 126 nations in the United Nations. We are an economic powerhouse. We are home to every race, religion, ethnic group, people of all abilities and all lifestyles. And we are very, very grateful for the contributions that our Indian American brothers and sisters make each and every day, whether it be in arts, entertainment, science, medicine, law, business, finance, education. Our Indian Americans make a big difference each and every day in the lives of all the residents of Nassau County. Jai Hind. Up. Jai! So the best is yet to come. So please take a seat. We have another 30 to 45 minutes of program, which is going to be a reincarnation of India, the birthday of Lord Krishna, and birthday of all those people whose birthday is today. So we are going to have that ceremony. So please don't rush. It's only 9 o'clock. Punjabi party starts at 9 o'clock. So, right? And we are here, and most of the people sitting in this room are Punjabi, right? So, we have a lot of Gujaratis, we have a lot of Marwadis, but all my request is do not leave until we have the celebration and birthday celebration of India, birthday celebration of Lord Krishna, and birthday celebration of everyone whose birthday is today, not this week, not tomorrow, only today. So please take a seat. Let's enjoy the rest of the evening. And I would like you to all stay until the time the program is officially over and the birthday cake ceremony is done. So please have a seat. So हर सरदार भगत सिंह जैसा प्यारा दिखाई देता है. सरदार कुछ बोले तो गुरु नानक का जयकारा सुनाई देता है.
अब तुम ही कहो कि मैं मेरा सर झुक जाने से कैसे रोकूं। मुझे तो हर एक पगड़ी में गुरुद्वारा दिखाई देता है। Hello viewers, I am Dr. Raj Bayani and it is my pleasure and honor to be part of this historic event which happened today in Marriott Uniondale to celebrate 79th India Independence Day. This event was organized and sponsored by Navika as well as Blue Sky Hospitality Group. The event has been a grand success. The Bruce Blackman County Executive was here, as well as more than 1,200 Indian community leaders and Indian community members were here. And there was a performance by a band called Dhwani that was mind-blowing, amazing, with all the patriotic themed performance, has blown everybody away. Overall, the mood is very jubilant, celebratory, at the same time, tremendous gratitude and respect expressed by everyone towards our freedom fighters. As we honor the past, celebrate the present, and build the future, let us all say, Vande Mataram and Jai Hind. Thank you all. So the idea was conceived to celebrate India's Independence Day and also a birthday of India came out of my mind that we do celebrate our friends, our families, and our associates' birthday. But I have never seen celebration of birthday of our nation, which is our soil, which is where we come from, which is where our skin and bones are made of. So that idea came to my mind to celebrate the birthday of our nation, and I feel proud that I did take that initiative, and this was the most successful event our guests have experienced in their lifetime in America. I hope to continue this momentum. This was the first ever, and I hope that every year we continue to grow this event in a grand and invite all Indian American to celebrate this event into future. Happy Independence Day, happy birthday, happy reincarnation day to our nation, India, 2025. Hi, my name is Neha Bhansali and I am Capital Management Director with Navika Group of Companies. About the event Shahidon ki Shraddhanjali, this is an event which is a random idea, an abrupt idea from our CEO, and he just came to our office once and he's like, I want to do this and I want to do it for my country. And then a couple of days he was like, should I do it? Do you think it's feasible? And we were like, if you want to do it, just do it. And it just happened like that. And today we had this event. It turned out beautifully. Everybody has put a lot of efforts to bring this to everybody today. I think our crowd enjoyed a lot. They were dancing, singing. They were so happy living, and that is what that matters, that every single person in this banquet hall enjoyed the show. Our musicians and performers teams have been rehearsing for over 2 months now. And I think this is a positive outcome for them, and they are very happy as well about it. And we hope that we are able to bring more of these events for the community. Although we are a private company, but I think community in India is always our priority, and we hope that we bring such events more and more to the public. Thank you. Hello, good evening. My name is Madhu Parekh. I'm the Senior Vice President for Blue Sky Hospitality Solutions. I manage Marriott and Hyatt portfolio for Blue Sky. As you see behind me, today we celebrated Shahidon ko Shraddhanjali, 79th Independence Day celebration. This came in our CEO's mind in May when we had a musical event in Navika Partners meeting, and he planned that let's do something for Indian fighters who sacrificed their lives for India. And he wanted to showcase this event in some different manner in a musical form, and I helped him to showcase this event.
So hope everybody liked it, and thank you so much. शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। इस धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। Dear audience, happy Independence Day. Today is a very special, historic, and a unique day that Marriott Long Island is celebrating India Independence Day. It is also celebrating reincarnation of India because on August 15, 1947, India was reborn with the right of freedom for all of its citizens. And this program is organized by Blue Sky and Navika group of companies. We are going to be having more than 1,000 guests this evening, and a patriotic musicians, singers, and performers have come from India to demonstrate and showcase as to what the commitment, dedication is there for India and for Indians living in America. I hope everyone will get an experience of it and everyone will enjoy the great evening. And I wish all of my audience a happy Independence Day and many happy returns of the day on India birthday. Thank you. Namaskar, hello everybody. Ragini Srivastava, I'm the town clerk, town of North Hempstead. It is so wonderful to be here, and I want to thank Naveen Shahji and the whole team for organizing this and taking this initiative. This is something that I think I am experiencing it for the first time, because we all are celebrating August 15, which is India's Independence Day, but here we are celebrating in a very different way. I see a lot of people from the community, and I felt like we see the soul of India in its full glory. And I want to thank everybody who is cooperating, who is coming and joining, supporting the event, or volunteering or sponsoring. Thanks to all of you, because of course 15th August is a day of celebration for all of us. It's also a day to pay tribute to those who sacrificed their life for us so we all can live freely. So thanks to everybody, and looking forward to this wonderful celebration. Thank you. Namaste, good evening.
Today is Saturday, August 16, 2025. My name is Dr. Sumita Sengupta, and we're here celebrating India's Independence Day in this beautiful venue, the Marriott in Uniondale, New York. Everyone is here honoring the sacrifice made by the heroes to make India a free country, and we're very blessed to be here, and we thank all those who sacrificed, and we want to remember everybody's contribution, the past, the present, and so that our future will know our great and rich heritage of dharma, oneness, and love and unity. We want to thank ITV Gold, Dr. Sudhir Parekh and his team, Ilyas, Kurashi, and Kripa Prasad. They're a wonderful team, and they're at every event keeping our culture alive. Namaste. Thank you for watching. मैं हूँ विभूति झा। आप सब हम मुझसे परिचय होगा, मिले होंगे कभी कभी। आज मैं अपने परम मित्र श्री हरिदास जी के साथ हूँ और इन्होंने नवीन जी के साथ ये बहुत बढ़िया आयोजन किया है। भारत की स्वाधीनता दिवस में शहीदों का बलिदान और उनको याद करना है हमें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें अपना इतिहास कभी नहीं भूलना, और इस इतिहास को अगर हम भूल गए तो अपने आप को भूल जाएंगे। तो ये जो काम किया है हरिदास जी ने और नवीन जी ने, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। मैं दोनों को दिलो जान से बहुत ही आभार प्रदर्शित करता हूँ और बधाई देता हूँ। इतना सुंदर प्रोग्राम उन्होंने आयोजन किया है। थैंक यू। मैं देवेंद्र बेदी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई इंडिया, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा उपराला किया है APS का हमारी सोसाइटी ग्रुप ने, बहुत बहुत मुबारक, सबको बहुत बहुत मुबारक। ये शहीदों को श्रद्धांजलि का उपराला हमारे सबके दिलों के ऊपर ये हमेशा ही ऑलवेज रहता है, हमेशा ही रहता है, और हमेशा ही ये बहुत बहुत मुबारक आज़ादी के दिन को बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। मैं सब तो पहला सारे इत्थे पहुंचण दा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा हाँ। मेरा नाम जय सिंह जापरा है। ये जो कार्य नवीन शाह एसोसीएशन विद गैरी सिक्का जी, बहुत ही शलाघायोग कदम है। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। मैं अनिल दुआ न्यूयॉर्क से सब सुनने वालों को, ITV देखने वालों को नए अपना इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, और जन्माष्टमी भी है। सबको जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। इट्स वेरी नाइस टू बी हियर। सबको बहुत बहुत मुबारकें हों 15 अगस्त की। लाइक हैप्पी न्यू ईयर। जो समझे सबको एक समान, 3 रंग से बना तिरंगा, यही हमारी है पहचान, यही हमारी है पहचान। आज हम यहाँ पर ब्लू स्काई हॉस्पिटैलिटी की तरफ से संयोजित इस प्रोग्राम में शहीदों को श्रद्धांजलि, अपने देश के लिए जिन्होंने इतनी सेक्रीफाइसेस किए, शहीदों ने अपनी जान गंवा दी और हमें आज़ादी दी, उन्हीं को एक श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है। सारे न्यूयॉर्क से दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचे हैं। नाविका का बहुत बहुत धन्यवाद इस संयोजन के लिए, और सभी लोग बड़ी हंसी खुशी यहाँ मिल रहे हैं। सभी को स्वतंत्रता दिवस की 79th की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंजू शर्मा फ्रॉम न्यूयॉर्क। ITV के श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम यहाँ मैरियट लॉन्ग आइलैंड में इकट्ठे हुए हैं। एक आयोजन है शहीदों को श्रद्धांजलि। हमारा प्रणाम है उन शहीदों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलवाई, और आज हम आज़ाद हैं विचारों से, कर्मों से, हर चीज़ से हम आज़ाद हैं कि हम अपनी आज़ादी का मान बढ़ा रहे हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है, कम्युनिटी के लीडर्स सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। एक ये बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है यहाँ पर कि हमने कम्युनिटी का प्रोग्राम रखा है कि सब लोग मिलकर, सारी संस्थाएं जितनी भी हैं लॉन्ग आइलैंड में, सब लोग मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं और सब पार्ट ले रहे हैं। और नाविका ग्रुप को हमारी बहुत बहुत बधाई।
इस आयोजन के लिए, हमें याद दिलाने के लिए कि हमारी जो जन्मभूमि है उसका ऋण हम पर क्या है। धन्यवाद। Hello, yeah, I'm Mrs. Sharda Kotawala, Navika chairman's wife, and we are here to celebrate the Independence Day. Our Dhwani group is going to give a program for the independence, Shahidon ko Shraddhanjali, and it's going to be very exclusive program for the everybody, for the शहीदों के लिए. And last night I saw the कौन बनेगा करोड़पति, उसके अंदर बताया गया था कि 3 जो जल थल और सेना के जो 3 लेडीज़ जिन्होंने कि बचाया सिंदूर ऑपरेशन के अंदर. It was wonderful to see the program, and they were wonderful ladies. They handled the program in 27 minutes. They did the Sindoor operation complete, and it was really proud feeling from our country, for ourselves, for all India, for all an Indian public. Thank you very much. काफ़ी लोग पूछते हैं कि भारत के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि भारत माता ने मुझे बनाया है, उनका मैं क्या बखान करूँ. उनकी इतनी प्यार है, हमेशा हमारे दिल में रहता है, तो उसके लिए बयान करना बड़ा मुश्किल है. और आई एम ए पार्ट ऑफ इंडिया डे परेड in Hicksville, so please come with your family and enjoy. And it's a moment of pride for India, and happy Independence Day. Thank you so much. Happy Independence Day. You know, we are so proud of that we are Indians and we belong to Bharat. Bharat Mata ki jai.